स्वागत है आपका मेरी आज की डिक्टेशन में। 1-2 मिनट जब भी लेट हुआ करे तो आप वेट किया करिए, क्योंकि एक बार पता नहीं क्यों यूट्यूब का सर्वर चलता क्यों नहीं है। और CSIR की डिक्टेशन आज आपको मिलेगी। क्या सभी लोग यहाँ मौजूद हैं? आप लोग देख पा रहे हैं डिक्टेशन को? हाय सर। हेनरी डॉस, हाय सर। तो ये CSIR की डिक्टेशन है। निष्ठा केसरवानी जी, गुड इवनिंग। और कोई कुछ कहना हो किसी को तो आप बोल सकते हो। सभी को गुड इवनिंग। और डिक्टेशन आज की कुछ मिनट्स में शुरू होगी। हेलो सर। हेलो बच्चा। तो किसी को कुछ कहना हो, कुछ आपकी रिक्वेस्ट हो तो बोल दीजिए डिक्टेशन शुरू होने से पहले। उस तरह से हम डिक्टेशन को रखेंगे। जैसे कुछ रिक्वेस्ट थी फ्लक्चुएशंस की, तो वो फ्लक्चुएशंस हम रखेंगे। और कोई रिक्वेस्ट हो तो आप बोल सकते हो। सर मेरे से प्रैक्टिस के बाद भी गलती बहुत हो रही है। गलती बहुत हो रही है तो उसका एक तरीका है कि सेम मैटर को कई बार प्रैक्टिस करिए। और एक मेरी गूगल मीट क्लास चलती है लाइव, उसको ज्वाइन करिए। उसमें हम लाइव पढ़वाते हैं। उसमें गलतियां आपको बताते जाते हैं, आप नोट करते जाते हो। तो अगर आप अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं दोगे, जैसे आज आप टू को इफ लिख रहे हो, मान लो कुछ भी टू को बट लिख रहे हो, तो अगली डिक्टेशन में भी टू को बट लिखोगे, उसके अगली डिक्टेशन में भी टू को बट लिखोगे, जब तक उसको एनालाइज नहीं करोगे। मेरा कहने का मतलब है कुछ लोग जैसे 40 डिक्टेशन 50 डिक्टेशन लिखते हैं महीने भर में या 15 दिन में, तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप एक ही डिक्टेशन को 2-3 दिन तक लिखिए, जब तक उसमें मिस्टेक जीरो ना हो जाए। ये एक सबसे बेहतरीन तरीका है आपकी मिस्टेक सुधारने का। और जो मेरी बात करें तो 2013 में जब हम एसएससी दे रहे थे, मेरा क्वालिफाई भी हुआ था, तो हम सेम मैटर तब तक करते थे 8-8 घंटा हम करते थे एक दिन में डिक्टेशन। क्योंकि उसमें वैकेंसी शायद बाद में आई थी 323 सीट ऐसे कुछ आई थी, वो याद नहीं एग्जैक्ट, 300 में कुछ आई थी। तो कंपटीशन उस साल बहुत ज्यादा था। तो बहुत दिन भर मेहनत करते थे कि कहीं पे एक मिस्टेक आ जाए। जैसे सेम डिक्टेशन लिख रहे हैं तो जितनी बार भी लिखते थे उतनी बार कोशिश करते थे कि ये जीरो मिस्टेक तक जब तक नहीं आएगा हम लिखते रहेंगे। हम तब तक लिखते थे जब तक जीरो मिस्टेक ना हो जाए। तो ये गलती सही करने का एक सही तरीका है। एक ही डिक्टेशन को तब तक लिखो जब तक जीरो मिस्टेक ना हो जाए। 10 डिक्टेशन लिखने से कुछ नहीं होने वाला, पहले बता दे रहे हैं। कुछ लोगों को एक फितूर होता है कि 10 चैनल ज्वाइन कर लिए, 40 चैनल ज्वाइन कर लिए। कोई ऐसी, मेरा कर लो, जरूरी नहीं कि मेरा ही करो, किसी किसी का भी कर लो। कोई ठीक ठाक चैनल हो, सही प्रोनाउंसिएशन हो, वो चैनल ज्वाइन कर लो और बस एक डिक्टेशन डेली लिखो, आपका हो जाएगा। अगर आपको चीजें ठीक लग रही हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी हम डिक्टेशन देने जा रहे हैं, उम्मीद है आपको आज की डिक्टेशन ठीक लगेगी। सर कभी कभी गलत लिखते हैं और पढ़ते भी गलत हैं, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि ना, एक डिक्टेशन को अगर 40 बार करोगे तो ये गलती नहीं होगी। अगर 40 डिक्टेशन को एक बार करोगे तो ये गलती होगी। तो वही फंडा है सेम। तो उम्मीद है कि आपकी जो शंका है वो हमने दूर कर दी। और बाकी अभी हम शुरू करते हैं। और किसी को कुछ नहीं पूछना है? वेलकम, वेलकम बेटा। एक छोटी सी डिक्टेशन हमने दी थी अपने गूगल मीट पे, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम। लगभग 300-400 वर्ड दिया था, लेकिन अभी हम लंबी डिक्टेशन देने जा रहे हैं। ध्यान से लिखिएगा। थोड़ा सा फ्लक्चुएट करने के लिए स्टूडेंट्स ने कहा था मेरे कमेंट्स में, तो वो करने जा रहे हैं। 10 seconds to go. कल डिक्टेशन होगी यूपीएससी की नई ओरिजिनल डिक्टेशन, एग्जाम हॉल से डायरेक्ट, तो भूलिएगा नहीं, शाम को 8 बजे स्टार्ट। We need to reform the industry. Broadly speaking, every industry and industrialist is entitled to grow to their fullest potential, but without recourse to
unethical practices or evasions of dues to the state. We need to also reform the mentality of the common citizen. He must realize the imperatives of hard work, quality work, and discipline. Responsible citizenry demands no less, and bearing those who belong to the weaker sections of the society and hence deserve all the support of affirmative action that we can render upon them, the others should begin to respect the laws which fashion and govern a sound economy, which means they must pay for what they use. And yes, they must also get what they pay for. In short, the nation as a whole needs to reform itself in order to be able to effectively face the new challenges and seize the new opportunities of the 21st century. Let us together create a mindset revolution to harmonize the objectives of economic liberalization and social liberation. Let us together build a strong, prosperous, and self confident India, freed from the curses of mass unemployment, illiteracy, and other manifestations of underdevelopment. And let us make India a global economic power in the 21st century. The key to translating this vision into reality is growth, growth with employment and equity in our national agenda. We have pledged to bring sustainable GDP growth into 7 to 8% bracket from the present level of 5%. Many people doubt if it is an achievable target. I would say that this is a moderate target given both India's capacity and necessity. Even at this stage of 7 to 8%, India has to wait for well over half a century to catch up with the developed world. Can we afford to be slower than this? We must grow faster. We can grow faster. We simply have no other alternative. In the sphere of the economy, I should tell you plainly that I have inherited a weak and deficit ridden economy. But I am not complaining. My job is not to harp on the past, but to look to the future, not to complain, but to lead. Shri Kumar has rightly talked about the need to rebuild confidence and morale of industry. He has especially highlighted the issue of bringing back decision making to the fore. I would like to utilize this occasion to tell you and the nation what my government will do in the next 3 months. All of us are legitimately concerned about the prolonged downturn in the economy. Industry, especially, is looking to the
government to take necessary steps to kickstart the economy. This is no doubt dictated by the objective of faster economic growth, but it is also necessitated by my own government's stated goal of creating at least 10 million new jobs each year in the economy. We shall soon announce a series of schemes to mobilize investable funds from idle resources existing in the country but unavailable to the exchequer. In consultation with trade and industry, we will take all necessary steps to reduce the currently untenable level of NPA as of banks and financial institutions. We will also devise machinery for resolving disputes between the revenue departments and trade and industry to speedily obtain for the government what is legitimately the state's. Also, suitable policy measures will be taken to tap new and unconventional sources of funding, such as debt market instruments, pension and insurance funds for infrastructure projects. The government is committed to broaden, deepen, and speed up the process of internal liberalization. In the case of globalization, we will adopt a carefully calibrated approach for regions most of you appreciate. The government will play the role less and less of an active player in the economy and more of a legislator, facilitator, and regulator. Where necessary, it will be the protector of India's commerce and industry. My government's relationship with industry will be based on trust, not marred by mistrust. I come from a political tradition that does not look upon commerce and industry with suspicion. When it was conventional political expediency to decry entrepreneurship, we championed their cause. As a government, we will do more. As a concrete proof of this approach, we will soon appoint a commission to comprehensively review in a short time frame all the administrative laws, rules, and regulations governing industry and trade. Such of them which have outlived their utility will be either totally scrapped or radically simplified. With this move, we aim to enable Indian entrepreneurs, small, medium, or big, to create more wealth for themselves and the nation. The Companies Act will be drastically overhauled. The Foreign Exchange Regulation Act will be replaced with a legislation consistent with 800 वर्ड्स की डिक्टेशन थी जो कि हमने एग्जैक्ट बोली है 10 मिनट्स में. नॉट 800, 801 वर्ड थे. मींस इसका मतलब है 80.1 की स्पीड निकली है.
परफेक्ट स्पीड में बोला था, हल्का सा फ्लक्चुएशन रखा था, कहीं पे हम शायद 78 तक ले गए थे और बाद में इसको हमने 82 तक घसीटा था। किसी को कुछ कहना हो, कैसा लगा? डिक्टेशन बिल्कुल साफ सुथरी दी थी, एक आध जगह शायद टंग स्लिप हुई थी, वही थकावट के कारण। कुछ कहना हो तो आप बोलिए, कल पोस्ट में हम डाल देंगे डिक्टेशन कितने बजे। 8 बजे वैसे होती है। कुछ अगर, हाय कमलेश जी, कुछ अगर गड़बड़ हुआ या कुछ चेंज हुआ तो हम पोस्ट में डाल देंगे। कमलेश जी हेलो। और कोई है जिसको कुछ कहना हो? डिक्टेशन कैसी लगी ये तो बता ही सकते हैं यार। 10 से 15 सेकंड हम और वेट करेंगे। और जो मेरा ग्रुप चलता है टेलीग्राम पे, अगर आप उसमें आओगे तो ये गूगल मीट पे हम आपको लाइव पढ़वाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। उसमें लाइव पढ़वाते हैं। हमको लगता है आप किसी को कोई और समस्या है, सब लोग बहुत तेज हैं। चला जाए फिर। भैया मेरे ग्रुप में गूगल मीट होगी 8:30 पे, तो मिलते हैं अपने स्टूडेंट से अपने ग्रुप में। और बाकी कल जैसे कि हम पोस्ट में पहले आपको बताएंगे, यूपीएससी की ओरिजिनल डिक्टेशन मिलेगी आपको 8 बजे, ओरिजिनल क्लासरूम से, नॉट ओनली पीडीएफ, ऑडियो समेत ऑडियो मिलेगी। तो हमको लगता है आप लोग ने डिक्टेशन लिख ली होगी, आपको अच्छी लगी होगी। किसको कुछ कहना हो तो आप कह सकते हो, नहीं तो 10 सेकंड बाद हम ये ये डिक्टेशन खत्म कर देंगे, ये क्लास खत्म कर देंगे, आई मीन। थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर निष्ठा जी। चलो भाई, बाय बाय।